Okay, now. Assalamu alaikum, welcome back again. In first video, I explain GIC2 section 1, 2, 3, 4, and I give the overview दिया छोटा सा, and then in next video I explain the section 1. In section 1, you can obtain 10 marks, secure 10 marks easily. ठीक है, 60 में से 10 मार्क्स आप सेक्शन 1 में ले सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आवर सेक्शन 2 एंड इट इज नॉट अ बिग डील. ठीक है, परेशान नहीं होने का. First of all, I will go and study the NEBOSH guidelines. What are they? And then I will come back. Okay? Yeah, here it is. As we remember, हम इस सारी चीज से हो चुके हैं. सेक्शन 1 के 7 पार्ट्स हमने देखे हैं एंड उसमें से हमें 10 मार्क्स सिक्योर करने हैं. इजी मार्क्स है. Next we have section 2. In section 2, I have to go back to the report pattern sheet. So here we have to write the date of the assessment, and then we have first box. In our first box 2.1, we have hazard category, and then we have hazard description. Okay, I have to go back now. So here it is. In hazard category, we have 21 categories. Okay, look at it. 21 कैटेगरीज. इनमें से हमने 10 कैटेगरीज लेनी है, या एज लाइक IG2 वी हैव टू चूज 5 कैटेगरीज और हर कैटेगरी के दो दो हैजर्ड्स हम लिखते हैं. 5 कैटेगरीज, 2 हैजर्ड्स, 5 into 2 10 hazards हमने explain करने. We have to explain 10 hazards. We can take 5 categories and write 2 hazards from each category. 5 into 2 is equal to 10. Or we can take 10 different categories and explain 10 different hazards. Okay, we can secure 15 marks in this first section, 2.1 and 2.2. 10 हैजर्ड लिखने हैं और 5 डिफरेंट कैटेगरी से होंगे तो 10 हैजर्ड्स के 10 मार्क्स और 5 कैटेगरीज के 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. अंडरस्टूड? यू कैन secure 15 marks in section 2 box 1 or column 1, sorry. Okay, you have to write hazard category and then you have to write hazard description. Like example, hazard category is electricity. Hazard kya hai? The wire is broken, so the welder or whoever it is using equipment, the equipment wire is broken, he can get electric shock. Okay, this is an example. So next block we have who might be harmed and how they could be harmed. We'll go back. I will explain hazard category. I hope you will get it. इन 21 में से आपने 5 लेनी है, उसके दो दो लिख दो, या आप 10 की 10 डिफरेंट hazard categories ले लें तो आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, यू हैव टू डिस्क्राइब वेल. ठीक है, यू हैव टू डिस्क्राइब कि प्रॉपरली हैजर्ड क्या है. ओके, नेक्स्ट who might be harmed. And in IG2, sorry, GIC2, actually it is the first time, so IG2 is on my tongue, so I'm saying again that IG2, this is GIC2, and GIC2 you study about the hazards and then you study that who might be harmed and how might be harmed. So workers, the visitors, and everyone around the surroundings can be harmed. So you have to write down like this: facility manager, falling height can cause brushes and fractures वगैरह वगैरह. Who might be harmed, जो एक्टिविटी को कर रहा होता है वो कैसे होगा, नंबर एक नंबर है. And how they could be harmed, if you are like I can get example of noise. So loud noise can make tinnitus and can cause tinnitus and ringing in the air, and you can reduce hearing. So like this you have to explain who might be harmed and how they can be harmed. The example यहाँ पे लिखी हुई है, you have to pause the video and you will write read it. Okay, how could they be harmed? Sorry.
So your risk assessment should also state the physical injury or ill health affected that the individual or group would be at risk of experiencing. And then you have to write out proper कि कैसे हो सकता है facility manager falling from height causing rushes and fractures workers and visitors being struck by falling objects तो ऊपर से कोई चीज आ रही है उनसे लेके जो वहां से गुजरने वाले विजिटर हैं वो इंजर्ड हो सकते हैं या वो ऊपर से अगर गिरेंगे हाइट से तो उनको रशेज या फ्रैक्चर्स आ सकते हैं इन दोनों बॉक्सेस के 10 marks है. Next we have hazard category 5 marks, hazard description 10 marks, and then who might be harmed 10 and how they could be harmed 10. ठीक है. Next we have to proceed to the section 2.5. I will get help from it. Heading क्या है? What are you already doing to control the risk? What are you already doing to control the risk? Next we have what further action do you need to take to control the risk? In this box you have to write अगर कंपनी उस hazard like electricity है उसको correct करने के लिए कोई control measures कर रही है तो you have to write it here. Okay, if एक दो तीन चार जो भी हैं आपने लिख देने. Next, what further action do you need to take to control this? If you remember hierarchy of control, eliminate, substitute, engineering control, administrative control, and PPE. In that way, you have to write control measures. ठीक है जो कि हैजर्ड कैटेगरी जो आपने पीछे चूज की है उसको कैसे कंट्रोल कर रही है इसके दोनों बॉक्सेस के मिला के कंबाइन 20 मार्क्स हैं ये सारे कंप्लीट होंगे तो ये 20 मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं तो ये सारे कट हो जाएंगे सारे बॉक्सेस कंप्लीट होंगे तो ओके नेक्स्ट वी हैव हु नीड्स टू कैरी आउट दिस एक्शन लाइक मैनेजर सुपरवाइजर फैसिलिटी मैनेजर एंड HSC पर्सन जो भी है बट इसका कोई मार्क्स नहीं है नेक्स्ट वी हैव व्हेन इज द एक्शन नीडेड बाय I will go back here and here like this you can read pause here and read this document I will share it like on the video I will drop a link and you can have it and I will share in my drive folder also so क्या है कि आप इसको रीड करें सेक्शन 2 में सेक्शन 4 कंपनी एक चीज को लेके पहले क्या कर रही है एंड देन आप किसके फर्दर कंट्रोल मीजर्स आपने बताने हैं उस हैजर्ड्स को पकड़ने के लिए ओके नेक्स्ट हु यू नीड टू कैरी आउट द एक्शन जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका आपने नेम बताना है और देन वी हैव व्हेन द उसका मार्किंग नहीं है हु नीड टू कैरी आउट द एक्शन इस वाली बॉक्स में कोई मार्क्स नहीं है ओके we have 5 10 15 and 10 10 20 15 and 20 35 and 10 20 45 and then in last box when is the action needed by 10 so total कितने हो गए 20 20 40 और 50 65 okay got it 65 in section 2 you can secure 65 marks in section 2 when is the action needed by 10 marks and इसमें we can mention immediate medium term and long term हर एक्शन को आपने डिफरेंट टीएस बताने की इसको इमीडिएट करना है मीडियम टर्म से करना है और लॉन्ग टर्म पे करना है ओके मीडियम उस एक्शन को जो आप फर्दर सुजेस्ट कर रहे हैं उसका बताना है कि आपने इमीडिएट का क्या है कि आवर्स टू फ्यू डेज के अंदर उसको आपने कंप्लीट करना है मीडियम टर्म क्या है कि फ्यू वीक्स टू द फ्यू मंथ्स आपने कंप्लीट करना है लॉन्ग टर्म क्या है सेवरल मंथ्स टू ईयर यू कैन कंप्लीट दैट थिंग ओके इस सारी चीज के 10 मार्क्स हैं और वो कह रहे हैं NEBOSH is saying that if time is not realistic we can get the mark तो आपने realistic time frame को बताना है I hope you get my points the way I am explaining to you you can get like easily कि पहले क्या करना है hazard लिखना है उसकी description लिखनी है who might be harmed how might be harmed what are you already doing to control the risk and then what further control actions then who need to carry out the action what when is the action needed by I hope you get it मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं लिट्टी को
जो कंपनी के मैंने सेक्शन 1 आपको दिखाया था उसका अभी सेक्शन 2 का नेक्स्ट पार्ट है। So here is hazard category, working at height, hazard description, maintenance and repairing work to the roof. Okay. And next we have who might be harmed and how they could be harmed. Read out करें, pause the video and read out, and then I will go further. So here it is. Just give me a second. So sorry for the wait. क्या था कि hazard category, working at height, then hazard description, maintenance and the repair work to the roof, who might be harmed, in-house building maintenance workers and any contractor who might be working alongside them. Okay. Next we have how they could be harmed: fall from height due to unprotected roof edges, or through skylights or fragile roof materials are up to 11 मीटर विच कुड प्रूव फैटल्स। ठीक है, आपने उसको बताना है। नेक्स्ट वो है व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, वो पहले क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखती हैं। देन फर्दर कंट्रोल में ये आपने बताने हैं। मेक श्योर हायरार्की ऑफ कंट्रोल, आप इसको फॉलो करें। एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट इंजीनियरिंग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड देन पीपी, यहाँ पे आपने उसको मेंशन कर दिया। देन हु नीड टू कैरी आउट द एक्शन, वेट या सो आपने मेंशन रिस्पॉन्सिबल बंदा पर मेंशन करना है। एंड देन यू हैव टू tell then when is the action needed by medium term, long term and immediate. Okay, like this you can fulfill your IG2. So like this, we completed the section 2. In section 1 we have 10 marks, in section 2 we have 20, 20 and 10 and 10, 60 and 5, 65 marks. In combined we can have 75 marks in first two sections. Good luck, and we'll meet in next video. Thank you.